Love this chicken bay. I love this chicken bay. I love this chicken bay. I love this chicken bay. बोलोगे न स्वाद ये इस बातों तुम दिल को लगे खुशियाँ हंसती खेलती दिल पाएगा इस स्वाद में जब भूख लगेगी जोर से देखो ना आगे पीछे खा लो तुम दुनिया भूल के अब इतना तो क्यों सोचे भूख लगी तो टेस्टी भी 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 I love this chicken bay. I love this chicken bay.
I request two teams captain, please go for tops immediately. The captain of Pristan Siddhak as well as the captain of Jagari Warriors, please go for toss immediately. Pristan Siddhak ಹಾಗೂ ಜುಗಾರಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಪಿಚ್ ಕಡೆದಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ 2019 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಜುಗಾರಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ. The toss is on by captain of Pristan Siddakatte and they elected to field first. So Pristan Siddakatte and they are also first time they are taking part in this tournament and especially in this UCG cricket ground, and it's definitely going to be a debut match for Pristan Siddakatte from 112, and wait and see how Pristan Siddakatte will going to take Jugari Warriors. So thank you very much for Pristan Siddhak to coming here and taking part in this tournament. Thanks to the owner of Pristan Siddhak, Mr. Philip manages, and wait and see how well they managed to start their journey on in this elegant 2019. So already for the latecomers, you're watching match number 3 as far as the result of this last 2 days is concerned. One team is already qualified for the semi-final of the prestigious cricket tournament from the Pool B. It's KFC Critical. The first team is entered into the semi-final. Today we'll tell you who is going to be the second semi-finalist, because from the Pool D we'll get the result today. Who is going to be the second semi-finalist of this Elegant Trophy 2019. Wonderful organization there from led by Elegant Youth Dubai and Ropex Duvail with in association with the Team Elegant Sports Club Bangalore in the memory of our beloved Finish Bian. And of course after that simple cricket tournament in season 1 the last year, it was started in the March 17, I remember. And that time it was a great leadership was doing here, and then of course another terrain organized a wonderful cricket tournament. So after that success,
We are in the second season 2, and one big difference in that tournament, that is we are missed Suresh VM in this season 2. Love this chicken bake. I love this chicken bake. I love this chicken bake. I love this chicken bake. बोलोगे न स्वाद ये इस बातों तुम दिल को लगे खुशियाँ हंसती खेलती दिल पाएगा इस स्वाद में जब भूख लगेगी जोर से देखो ना आगे पीछे खा लो तुम दुनिया भूल के अब इतना तो क्यों सोचे भूख लगी तो रेसिपी भूख लगी तो रेसिपी भूख लगी तो रेसिपी भूख लगी तो रेसिपी love this chicken bake I love this chicken bake. So once again back to this match, the match number 3 of day number 3, as a signal came from umpire Sriraj is signaling towards our scorer. Little bit change in the left of our commentary box as a scorer in the place of Mahesh. Now it's going to be a Naushad will going to be a scorer for this match. In the right side, a little bit change in scoreboard as well in the fame of in place of Rajesh Martis, it's going to be Muhammad Ali in the scoreboard. So first delivery, it's going to be a dotted one, ball there by Fayaz, which is a little bit outside the off-stump, and opening batsman of Jagari Warriors, Jayant, is completely beaten in that occasion. So again, Fayaz away from us, right arm over the wicket, balls went for the reverse sweep, going to be a wide call by umpire, good collection there from a wicketkeeper behind the stump. I think is Rafiq is a wicketkeeper behind the stump, gathers the ball, and there is no chance of any extra, but definitely going to be a one extra in the form of white, but not from the by. But one on the board for Jagari Warriors. Open the account again, try to play the reverse shape, almost identical mirror display of previous delivery, similar line, similar decision there from umpire as well. So similar reaction there from a batsman as well, and very good collection as well from behind the stump by Rafiq. So Rana Rafiq having a little bit conversation. He's got a little bit tips to Fayaz to not to ball that wide ball whenever the ball or the batsman is going for the reverse sweep. This is not a line to ball, but he's got a protection in the deep third man for the reverse sweep. That's why Fayaz is not worried about that line, but worries about that delivery, which is bowling a little bit far outside the off stump. Now this time well in the reach of the batsman. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball, and by call by umpire, Skomers up to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Time is exactly 12 past 5, and seems to be not that much of hot temperature compared to the previous 2 days. Not even it was a 30, just above 30 degrees Celsius. Certainly going to be not that much of hot. Seeing the fact that we can see a little bit of wind as well in this cricket ground, so that even though it was 12 o'clock, but still I think it's a very good atmosphere here in UCG. As a Fayaz bowling right arm over the wicket outside off stump, Rafiq. This time collects the ball, but as far as a fair cricket is concerned, in a present cricket, that kind of unfair action is not allowed by that as far as the rules and regulation is concerned. As a Rafiq wicketkeeper behind the stump, as he collects the ball, turns back, probably wanted the batsman go for that run there. Then down the leg stump, going to be one more white, one more extra. Fires a little bit struggling here. Is a line and
length is concerned, is bowled a third wide of this over, right arm over the wicket. Going to be a fourth wide. Going to be a fourth wide. Batsman crossing over. And good piece of fielding and wicket keeping there from Rafiq there, but couldn't manage to stop the singles from these two batsmen. So two wides. So runs are coming very freely in the form of extras only. The Fires are really struggling to get the line and length. Not a good start. Being the opening bowler, he always going to be very, very strict. Why you are the opening bowler for your team? Because they need to know that what role you're going to play as opening bowler. This is not a good start there from Fires. 6 extras and scoreboard is 6 on the board. That means without contribution from the bat, the Fires conceded all 6 runs in the form of extras. Fires, right arm over the wicket, away from us. Bowles, nice looking drive, like a placement. Wow, that was a sloppy fielding, absolutely sloppy out there in the extra cover fielder. Just ball is passing under his hand. And what could be a certain chance of run out with the fielder, because of that misfield, the batsman completed a couple of runs here. So he's up the mark. Jayant is up the mark with that couple of runs. Comas up to 8 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. 5 hours away from us. Bowles this time, lovely shot. Played that one reverse flip quite nicely down to deep backward point region. There is the fieldsman in the deep, so that batsman have to settle for the single. Good looking strokes actually there from Jayant there to pick the single. So its individual score now was up to 3, and the total score of his team is goes up to 9 without loss of any wicket. 5 hours. Bowling. Right arm over the wicket, and that was a good line. That was a good line indeed. Even though width is offered outside the off time, but fact that his ball is coming all along the ground, so that batsman Dikshit couldn't manage to reach the delivery, and dotted delivery to end the over number first. Then Jagari Warriors, they scored 9 runs what they wanted, but more than the contribution from the bat, the extras really contributed out of that 9 runs, and 6 extras comes up. So wait and see. We're going to bowl that second over of Jagari Warriors innings. Second over the power play from late Suresh Bian memorable banner end. Jersey number 77, and that is the Riaz is a bowler. And wait and see what Riaz will going to do here, and what could be the strategy from the batsman Jayant in this second over of the power play, the last over of the power play. And just wanted to see the field set there. So Rafiq standing well behind the stump. Now he's sending one fielder from a third man to deep backward point region. And there is a short cover, short mid off. There is no protection in the offside region in the deep. And of course now from the short mid wicket region, one fielder coming out there in the short extra cover region. That means all the protection. We can see there's one protection out there, deep backward point. There is no protection in the deep, in the offside, in the deep lawn. There is no fielder in the offside. One at the deep third man, in fact. And bowlers should be very careful. The bowling, the line and length is concerned. So from the far end, Riaz bowling first delivery of the over number 2 to the right-hander batsman Jayant, who is batting on 3. 5 men in the onside, 4 men in the offside. Here is the next one. First delivery. Just a lovely execution. Beautifully played. Perfect limited out strokes, especially in the power play overs. That was a very good handy cricketing stroke there from Jayant. Quite deliberately played that one. As a slog sweep was attempted, but right over the infield. Once it ball is passed over the infield, then it was a shortest part of the ground, and a quick outfield as well for in UCG. So going to be a boundary. Excellent cricketing stroke there from Jayant. Nothing wrong with the line, but he was premeditated. Little bit of shuffling across off the line of the delivery, and is bending his front foot right near the pitch of the delivery, and timing of that stroke is perfect to get that boundary. Score was up to 13 on the board without loss of any wicket in the over number 2nd in progress. A good start for the over number 2 here, as Riaz again having once again no protection in the deep backward square leg, but protection there in the deep long on and deep third man. Here is the next one again. This is not a good bowling. It's going to be a boundary there, back to back boundary. This is very important to you to the ball as for your field. When you are not having a protection in the deep, in the onside, in the deep line defined against square leg, what is the necessary of keeping the fielder in the deep third man? And batsman Jayant very clever in the occasion, saying that there is no protection in the deep back for square leg and fine leg. The bowler is not bowling that line, in that line. So easy for the batsman to deliver that one. Jayant again just using the face
and delicately played that one right in the gap and going to be a boundary. Score was up to 17 on the board without loss of any wicket. Now quickly realizing Captain Rafiq, because of course the batsmen have to take the risk to play the reverse sweep. Captain Abib will need to see that, because reverse sweep playing is a very risky one, but playing traditional strokes is very easy, just like sweeping the ball, flicking the ball, but you need to have some kind of protection in that region for traditional cricketing strokes. As again Riaz, now he's got a fielder in the deep mid-wicket region, and where is he, what could be the line here for Riaz from the far end. Right up over the wicket, balls down the leg stump. Again bat bowler really struggling to get the line and then, but this time definitely going to be a bye, because that ball just passing under the bat of the batsman, and a bye is called by umpire. Score was up to 18 on the board. Very good score. Runs are coming in this second over of the power play. 9 in the first and 9 already in the second, but just in a 3 deliveries ball there by Riaz. Right up over the wicket, balls outside the off stump, better delivery, better line. Of course, might be that Dikshit is a little opportunities missed out, because no fielder in the deep in the offside region, so that he couldn't manage to take advantage of delivery, because that ball came all along the ground. So Riaz just survived from that delivery. Riaz bowling, ball him, clean him up. That's what the line Riaz need to bowl. Perfect delivery to receive the Dikshit wicket. Might be batsman little bit shuffling across. Then the line of the delivery is pretty good in that occasion, and there is a gap between bat and pad. Did the trick there, and ball hits the middle stump of right under batsman Dikshit. His first wicket is back into pavilion of Jagari Warriors. 18 for the loss of 1 wicket. Again Dikshit fails to contribute from the bat. Didn't got success in the first match, which they played their first match against Bandar. Little bit correction. CM Bengre. So once again Dikshit fails to contribute from the bat. Bhuvan, I think, is the new batsman. Bhuvanesh done a good job in the previous match against CM Bengre. So this batsman has actually chases the target quite easily. The match against CM Bengre. This time ball is in the air. Appeal for a caught and ball, but umpires Iqbal knows that ball after one bounce collected by the bowler, so that no chance at all for getting out here. So 19 for the loss of 1 wicket. 2 overs completed, a highly expensive over, but still it was a wicket taking over. 10 runs came from that over and a wicket. So that means even Jugari Warriors, they lost the wicket, but they got runs what they wanted. Hanif Godinambali is the new bowler. Very experienced campaigner, Hanif. Will going to start his fresh over, third over of the innings of Jugari Warriors. Jayant is in non-strikers and Bhuvanesh will going to take the strike. Bhuvanesh is off the mark in the last ball of the over of the previous over, so he is get ready to face the next delivery. First delivery of the opener, over number 3. Bowling right arm round the wicket, short fine leg, square leg. One at short mid wicket, one at a deep mid wicket, between mid wicket and square leg, and one at deep long. A lovely shot straight down the ground, going to be a boundary. No need to run for that. Absolutely perfect straight drive, as straight as an arrow.
Delightful straight drive. Whenever the batsman playing that shot, it's one of the most beautiful stroke to watch, especially when you are having a mic in a commentary box, straight angle. We can see that was straight down the gun, just over the head of the batsman, and sweet sound we can see. We can hear the sound of the bat and ball is contacting, and that means it was a sheer timing in that strokes. So 23 for the loss of 1 wicket, even though number 3 in progress. So one of the most difficult for the bowler whenever the batsman playing that straight drive. You can't set a field for that. Again, lovely shot. A little bit square at this time. Down to wideish long off region. But now this got a protection in the deep long off so that batsman able to pick the single. So confident looking stroke there from Bhuvanesh. Very good technically sound player. Even though might be a little bit movement of his feet. But he's got a very good eye. And the bat is really coming to the line of the delivery very quickly. So that he managed to get the timing behind the strokes. 24 for the loss of 1 wicket. As again Hanif bowls, the batsman went for the reverse sweep, going further away, wide signal umpire, so one more addition to total score now moves up to 25 on the board. Quarter century comes up here for Jagari Warriors in a quick time. I will tell you, just this over number 3 in progress, and they got that 25 in just 14 deliveries. Again, oh, what a fielding, absolutely perfect. The need to get that result because the way you fielded, fantastic work. Both the batsmen are in the same end because no chance at all for the batsman to think this is definitely going to be a disappointment here for Bhuvanesh, who really looks pretty good from the bat after Jayant played that reverse sweep without seeing the fielder. He is gone for the run. I think it's not a mistake of Bhuvanesh, but certainly Jayant, without seeing the ball, without seeing this partner, is went for the run, the blind attempt for that run, and of course the penalty is paid by his partner Bhuvanesh, unfortunately. But fantastic piece of fielding, very good application, commitment from that fielder, because that ball is really went very quickly to that fielder. Little bit second to react to that one, and he has reacted very well, even though he fielded very well, and then he was managed to see that opportunity of run out in the strikers and returns that one very quickly to the hands of wicketkeeper as well. Altogether good cricket, and what Siddakatte has really wanted in this occasion, when runs are really coming very freely for the opposition, when you picked a big wicket like Bhuvanesh, I think it's the right time for Siddakatte to tighten up the screws here. So 25 for the loss of 2 wickets. Bhuvanesh is back into pavilion, looks pretty good in the middle. A disappointment end for him. This time again top end, Lagos once again going to be 1 more wicket. But if I want to see whether it is a caught and bowled or run out, it's a run out because ball bouncing after ball is pitched, after grounded, then ball is high up in the air. So, but batsman really Charan is not able to see again this partner. Almost looks like the batsman has didn't got that much of understanding between the wicket. Disappointment end here for the new batsman as well, Charan. Back into pavilion, back to back 2 wickets in the form of run out. Hanif did a fantastic job here. On his follow through, he fields the ball, and that time of course the new batsman Charan almost is in non-strikers and he wanted a single, but there is no chance at all for any single. New batsman in is Yogendra, one more recognized batsman in the side of Jugari Warriors. He is from Mudabidri, one of the most famous name in the region of Mudabidri. He's a very good performer from the bat, and now it's time for him to show his talent because of 2 quick wickets back into pavilion in this over. Hanif appeal for leg before wicket, and umpire says certainly that ball is going to miss the off stump because batsman bowler bowling wide of the crease and a little bit deviating, and rightly so that ball is missing the off stump. A leg by call by umpire, but good shot, not a bad shot there from Hanif. Last delivery left in this over. 26 on the board for the loss of 3 wickets. Hanif, after conceding the boundary, he's bounced back very well with some excellent deliveries, which is came along the ground with a great deal of pace.
Again, that's what the line you need to bowl. Whenever you're bowling around the leg stump, around the wicket, then this angle or middle stump, pitching the ball on the middle stump and little bit deviating, certainly it's going to be better delivery, better line for the right-handed batsman. So good comeback there for Manif. So 3 overs completed. And still, I think as far as the run rate is concerned, Jugari Warriors not that much worried about that run rate, but they really worried about that 3 big wickets are back into pavilion. They need to have some kind of partnership between these two batsmen. Wait and see strategy from these two batsmen remaining 5 overs. 26 for the loss of 3 wicket. Look like Riaz will going to continue. Might be a little bit expensive in this previous over where you conceded 2 boundaries. 10 runs from that over. That time Giant is hit it that 2 boundaries. But the difference in this first over and his second over is that he is bowled first over in the power play overs. Now it's a fielding restriction is over, so that he can keep fielders in the deep. So might be a little bit relaxing for the bowler Riaz, that now he is having some protection in the deep, so no danger at all for him, because of poor line and length he considered that 2 boundaries, but he bounced back very well after that. He picked up a wicket as well, the wicket of Dikshit, and he picked up a wicket in the 5th ball of his first over. Now back this over number 4, then short third man. There is a fielder in the deep backward point, no fielder in the deep cover and extra cover, but there is a fielder out there in the deep long off, one at short cover, short fine leg, short mid wicket, one at deep long on, one at deep backward square leg, and one at deep mid wicket. That means altogether 5 fielders in the onside and 4 fielders in the offside. Riaz, one more talented young cricketer for the side of Siddakatte, bowls down the leg stump, no chance at all for any leg before wicket, and batsman certainly will going to pick a single in the form of leg by call by umpire Iqbal. Then score was up to 27 on the board for the loss of 3 wickets. Jayant and Yogendra, most experienced campaigner for the side of Jagari Warriors, as again Riaz bowling from the late Suresh Bian memorable banner end. Here you go. Next ball. Play the reverse sweep. Straight to the hands of fielder. Might be a little bit fumble from the fielder, but he's recovered very well, so that batsmen are not interested for any run, because already there is a 2 run out taken place because of some misunderstanding. So doesn't want there one more run out here. That's why batsman a little bit watchful in the negation. Rightly so. Riaz 3, 4, 5 steps away from the non-striker's wicket. He's bowling right arm over the wicket, down the leg stump. That's what Riaz really need to work out. The wide delivery down the leg stump, and he couldn't manage to control his line again down the leg stump. Extra run. Score was up to 28 on the board for the loss of 3 wickets. So quiet cricket is going on here. After that 2 boundaries in the first over, then 1 boundary came from the bat of Bhuvan, then when runs are coming in the form of singles only. One more single, then Jayant picked up a single down to short mid on. Not convincing stroke there from him, but still he managed to rotate the strike. Score moves up to 29 on the board. Riaz back to his bowling mark, pitching the ball several times before he's taking the run up. Again batsman tried to play the sweep shot. The wicketkeeper Rafiq is really not having a good time here. Wide call by umpire. So 2 more to the total in the form of wide. Score moves up to 31 on the board for the loss of 3 wickets. Riaz already conceded 3 runs in the form of extras in this over. 2 wides, 1 down the leg stump, 1 far away outside the off stump. That was a fantastic line. No hesitation at all for umpire to raising his finger plumb in front of wicket. Giant little bit misjudging. He thought that it ball definitely going to be the outside the leg stump, but ball is pitching in the line. Straighter one, certainly going to hit the middle stump. No chance at all for the batsman to survive from the leg before wicket, and Riaz picked up his second wicket. The wicket number 4 of Jagari Warriors are back into pavilion. Now it's a subtle batsman. Jayant is walking towards some pavilion.
Jayant has contributed double figure for 12 runs he scored out of 12 deliveries with that 100% strike rate. 12 balls and 12 runs, not a bad one. And now it's the Siddakatte, Priston Siddakatte. There's the right time for them to bowl some good overs so that they can put the break onto the run rate of Jagari Warriors. Riaz is confident bowler. Bowls this time, going to be one more wicket. Yes, taken. This is not a good shot selection from the new batsman just coming into the middle. Shreyas went for the reverse sweep, couldn't manage to keep it down as a short third-man fielder. Looks like ball is a little bit slipping out of his hand, but he's managed to hold the catch. And the wicket number 5 of Jugari Warriors are back into pavilion. 31 for the loss of 5 wicket, and Riaz really bounced back in his second spell. A little bit correction in the bowler's name as Nasir, and then Riaz has got a similar jersey number. That was so that a little confusion. It's not Riaz, but is Nasir is the bowler who picked up a 3 wicket. Down the leg stamp, going to be one more wide. This is not a good bowling actually, Nasir, because he need to be very confident after picking a 2 back-to-back wickets. He's almost in an hat-trick, but that wide ball, and certainly not going to help Pristan Siddhak, but definitely going to give a lot of confidence for the new batsman. Dikshit is the new batsman. Get ready to face the bowling of Nasir. Nasir went for the sweep shot. Again the good delivery, good delivery indeed there from Nasir. So fantastic over, wicket taking over, 2 wickets in that over here for Nasir. Fantastic comeback over here for Priston Siddhak. Now I think is owner of Priston Siddhak, Philip Menenges, must be pleased with the performance of his boy, what Nasir is did in the second over. So 32 for the loss of 5 wickets. So 4 overs completed, and wait and see how many runs they will going to score in the remaining 4 overs. And time here for change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of a match in our national language, Hindi. धन्यवाद सतीश। तो बाउंस बैक पिछले ओवर में कुछ हद तक कर चुके हैं, पिछले 2 ओवर में कहना पड़ेगा। प्रिस्टन सिद्धकट्टे के गेंदबाज, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आधा सफर तय हो चुका है, आधा सफर तय होना बाकी, और 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। रियाज जो कि इस वक्त गेंदबाजी आरंभ करते हुए, और वो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, और रियाज तैयार। स्क्वायर लेग का फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 4 ओवर का खेल बाकी, फील्डिंग में जमावट अभी भी चलती हुई, खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, दोपहर के 12:30 इस वक्त बज चुके हैं। ठीक तरह से अगर कहा जाए तो 12:35, और गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहां पर बढ़ती नजर आती हुई। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, पहले गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंची, जहां पर फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया इस वक्त गेंदबाज ने, और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। रियाज
एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को खेला मिड ऑन, फील्डर गेंद को रोकने में असफल, बैकअप होता हुआ वाइड लॉन्ग ऑन पर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। डाइविंग एफर्ट जरूर किया था वाइड मिड ऑन के फील्डर ने, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर रहा, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। रियाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ये गेंद स्वीप करना चाहा विकेट कीपर चुके, और जब तक विकेट कीपर रफीक अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का 22 के रूप में। तो रन्स सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए 34 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 5 विकेट के नुकसान पर, 34 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार ऑफ स्टंप से बाहर। दिस इज एन स्लॉपी, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी। तोहफे उपहार के रूप में ये चौका प्रदान करते हुए, और 5 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं इस वक्त अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में। तो काफी अतिरिक्त रन प्रिस्टन सिद्धकट्टे के गेंदबाज अब तक प्राप्त दे चुके हैं, और फलस्वरूप इस वक्त जुगारी वॉरियर्स एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ 18 अतिरिक्त रन अब तक प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज प्रिस्टन सिद्धकट्टे के। और एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद पैरों पर टकराई, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई आखिरी मौके पर, और इस बीच अंपायर का इशारा लेग बाई का, और लेग बाई के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 40 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, रियाज रिवर्स शॉट खेलना चाहा, विकेट कीपर रफीक का गेंद को टटोलते रहे और आखिरकार ढूंढते रहे कहना पड़ेगा, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन लेने से इस वक्त रोकने में सफल, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में। 6ठा विकेट 40 रनों पर, मिसअंडरस्टैंडिंग, और आखिरकार एक बल्लेबाज इस वक्त पेविलियन वापस लौटता हुआ उनकी पारी में, तीसरा रनआउट उनकी पारी में, और विकेट नंबर 6 गिर चुका है 40 रनों पर। राजेश नए बल्लेबाज के रूप में। धीमा क्रिकेट एक धुआंधार शुरुआत के बाद हमें यहां पर देखने को मिल रहा है जुगारी वॉरियर्स की पारी में। पहले 2 ओवर्स में उन्होंने बनाए थे 19 रन, और उसके बाद एक अच्छा कमबैक कर चुके हैं गेंदबाज प्रिस्टन सिद्धकट्टे के। रियाज राजेश के लिए यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड 41 और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 41 रनों पर। ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए 42, और 5वें ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed, it's 42 for the loss of 6 wickets for Priston Siddhak, except they lost their 6 wickets. They are going along nicely. Exactly 8.40 runs per over, the present run rate here for them. And still in our calculation, it's going to be 3 overs remaining, and let's see how many runs they are making in these remaining 3 overs with the help of 4 wickets. तो जहां तक गेंदबाजी के बारे में अगर देखा जाए तो प्रिस्टन सिद्धकट्टे की ओर से नासिर ने एक बेहतर गेंदबाजी की। 2 ओवर में 12 रन प्रदान करते हुए 3 बहुमूल्य सफलताओं को, 3 विकेटों को उन्होंने प्राप्त किया। और नासिर के अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज जो खास कर परिणामकारी गेंदबाजी करने में अब तक असफल रहा है। फयाज गेंदबाजी इस वक्त करते हुए, राजेश स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, योगेंद्र नॉन स्ट्राइकर एंड पर।
फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, क्वाइट क्रिकेट, खामोश क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए, हवा का रुख कुछ हद तक धीमा, वृक्षों के पत्ते इस वक्त जिस तरह से हिल रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख कुछ हद तक इस वक्त धीमा है। और नई ओवर की पहली गेंद, ये गेंद ड्राइव करना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। फयाज नया ओवर इस वक्त प्रारंभ कर चुके, प्रिस्टन सिद्धकट्टे की ओर से अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दिशा से भटकती हुई गेंद वाइड। एक्स्ट्रा नंबर 19 उनके खाते में जुड़ता हुआ, एक्स्ट्रा नंबर 21 कह रहे हैं हमारे स्कोरर नौशाद, तो 21 रन यानी लगभग 50% उनके टोटल रन से वो अतिरिक्त रन के रूप में प्रदान कर चुके हैं। 50% ऑफ द टोटल रन्स कंसीडर्ड बाय द बॉलर्स ऑफ प्रिस्टन सिद्धकट्टे इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास। और एक बार फिर से तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए कदम जरूर बढ़ाए लेकिन ऐन मौके पर कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित 1 रन के साथ संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। लेग बाय का इशारा और लेग बाय की इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। जो हवा हल्की सी इस वक्त चल रही है, वो हवा इस भीषण गर्मी से खिलाड़ियों को और दर्शकों को काफी हद तक राहत दिला रही है। ये गेंद इस बार डेलिबरेट गेंद को खेला था और आखिरकार रन नहीं मिले। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद चिप किया इनटू द गैप, 1 बाउंस एंड कट्स इट ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस ब्रिलियंटली। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, अपने बाईं ओर दौड़ते हुए, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद पर लपक पड़े और गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल फील्डर रहा। और 2 रन इस गेंद पर बल्लेबाज ने प्राप्त किए। 48 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। 48 for the loss of 6 wickets। गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद आक्रामक स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद को रोकने में सफल और गेंद सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। हालांकि गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन गेंद को रोकने में असफल और गेंद उनके हाथों को वंचित करती हुई उनके पैरों के, दोनों पैरों के बीच से निकल गई, सीधे सीमा रेखा के दीवार पर जाकर टकराती हुई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ द 50 इज अप फॉर जुगारी वॉरियर्स। 52 for the loss of 6 wickets after the completion of 6 overs. Fine progressing here now for them. So just 2 overs now left in the innings। सिर्फ 2 ओवर का खेल बाकी और गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए हनीफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान प्रिस्टन सिद्धकट्टे के। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद चिप किया लॉन्ग ऑफ पर और यह गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त योगेंद्र के बल्ले से लगता हुआ, मिडल ऑफ द बैट कलेक्शन, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद पर हावी होते हुए गेंद को डिस्पैच करने में सफल, खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 58 रनों पर। 58 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। यह गेंद स्वीप किया इस वक्त, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता।
और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 59 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 59 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। सातवां ओवर इस वक्त प्रगति पर। स्टिल सम फील्डिंग एडजस्टमेंट्स इज गोइंग ऑन देयर और डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर को काफी स्क्वायर डीप कवर पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान इस वक्त तैनात किया गया है, ठीक सीमा रेखा के पास। और गेंदबाज तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद, दैट्स बेटर, मच स्लो वन, धीमी गेंद थी पिछले गेंद के मुकाबले और बल्लेबाज इस गेंद को खेल नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच बल्लेबाज को रन नहीं मिला। बेहतर गेंदबाजी। Again, chip, and this could be gone all the way. Yes, it does. It's a biggie. Got that one right from the middle of the bat and dispatched it in a style into the wall of commentator box stand. राजेश के बल्ले से ये छक्का जड़ता हुआ और छक्का नंबर 2 इस ओवर में प्रदान करते हुए बल्लेबाज गेंदबाज माफ कीजिए हनीफ इस ओवर में काफी महंगे इस वक्त साबित होते हुए। इस बार आक्रामक स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर, लेकिन रक्षण प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद और इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। 66। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, अपील हल्की सी जरूर है लेकिन अंपायर ने नकार दिया सही तरीके से। लेग बाय के रूप में 1 रन, 67 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करता हुआ जुगारी वॉरियर्स। 67 for 6 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स। अफरीन इस वक्त नया ओवर आरंभ करते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार राजेश और बहुत ही विचित्र माफ कीजिए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार योगेंद्र, जबकि राजेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और जुगारी वॉरियर्स की पारी का अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ। अफरीन गेंदबाजी करते हुए लेट सुरेश बी एंड की ओर से। तैयार। फील्डिंग में जमावट अभी भी चलती हुई। स्क्वायर लेग के फील्डर को इस वक्त डीप मिड विकेट पर तैनात किया गया है और अफरीन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रहा। ये गेंद इस बार डिस्पैच कर दिया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। सफल होते हुए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए गेंद को स्कूप कर दिया इस वक्त स्वीप के साथ और बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए गेंद को डिस्पैच करने में सफल। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त योगेंद्र के बल्ले से और इस चौके के साथ 71 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 71 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। टेरिफिक प्रोग्रेसिंग ईयर नाउ फॉर जुगारी वॉरियर्स। जुगारी वॉरियर्स योद्धा की भांति इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। अंग्रेजी में वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा और योद्धा की भांति इस वक्त उनके बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। और इस बीच लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा। अफरीन ये गेंद टॉप एज, इस बार मौका हो सकता है लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को एक अच्छे जजमेंट के साथ डीप मिड विकेट फील्डर लपकने में सफल। हालांकि शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर पीछे की ओर दौड़े, लॉन्ग ऑन के फील्डर दौड़ कर आए और डीप मिड विकेट
के भी फील्डर दौड़कर है, लेकिन सबसे पहले पहुंचे डीप मिड विकेट के फील्डर, उन्होंने एक बेहतरीन जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और इसी के साथ योगेंद्र की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। 32 रनों की साझेदारी इस वक्त टूट चुकी है योगेंद्र के रूप में। 32 रन्स, 7th wicket partnership has been came to an end in the face of Yogendra, caught by deep mid wicket fielder in the bowling of Afreen, and Jagari Warriors are now losing their 7th wicket. It's 72 for 7. तो योगेंद्र अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा करने के बाद पेविलियन वापस लौट चुके हैं। 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 12 रन बनाए और अब नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार राजेश। अनऑर्थोडॉक्स ग्रिप इस वक्त उनका और बल्ले को विचित्र शैली से वो पकड़ते हैं, लेकिन स्ट्रोक्स करारे खेलते हैं। ये बार गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, पैरों पर टकराई। आमतौर पर बल्लेबाज बल्ले को दाईं हाथ से नीचे पकड़ते हैं, लेकिन यहां पर बाएं हाथ से बल्ले को नीचे पकड़ते हुए दाईं हाथ को ऊपर बल्ले के पकड़कर विचित्र शैली से बल्लेबाजी करते हुए इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ खेला। शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा। 73 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 73 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स नाउ। 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। Full toss, fine, it's gone fine, and he gets an boundary for that. फुल टॉस गेंद, आखिरी मौके पर कहना पड़ेगा बल्ले पर गेंद पर सिर्फ बल्ला उन्होंने अड़ाया और गेंद शॉर्ट थर्डमैन फील्डर और शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के बीच में से निकल गई। फाइन डीप थर्डमैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इंटेलिजेंट क्रिकेट। 77, 7, 7, 7 और 7, यानी कुल मिलाकर 8वां ओवर इस वक्त प्रगति पर है, लेकिन स्कोरबोर्ड पर सर्व 7वां इस वक्त दिखाई देता हुआ। राजेश मार्टिस बेहतरीन तरीके से स्कोरबोर्ड का इस वक्त ऑपरेट करते हुए यह गेंद, अच्छी गेंद, इस बार रन आउट होता हुआ। तो इस बार थोड़ी देर से उन्होंने बेल्स ऑफ किए और वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का। 78, 78 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अंतिम गेंद बाकी। 78 रन, 78 the score, highest total of this tournament scored by Bandar 11. 84 runs they scored in the stipulated 8 overs, and now Jugari Warriors got the chance to equal the highest score of the competition with the Bandar 11. छक्का झड़ते हैं तो स्कोर 84 तक पहुंच सकता है। ये गेंद, अच्छी गेंद, बेहतर गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके हैं, पारी की भी समाप्ति कर चुके हैं और निर्धारित 8 ओवर समाप्त होने के बाद 78 रन बनाए जुगारी वॉरियर्स में। 79 रनों का लक्ष्य इस वक्त उन्होंने रखा है प्रिस्टन सिद्धकट्टे के सामने। और जहां तक आस्किंग रन रेट का सवाल है, ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर, जस्ट अंडर 10 रन पर ओवर। दैट मींस इन एग्जैक्टली कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 9.88 रन पर ओवर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। 79 ऑफ 8 ओवर्स और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर चंद लम्हों बाद होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक। राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब प्रिस्टन सिद्धकट्टे की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
So thank you very much, Gopi. So welcome back. This second innings, the innings of Siddakatte, Pristan Siddakatte. They need to climb the mountain of runs. The monumental target here for Pristan Siddakatte. They need to get 79 runs to win this match out of 48 deliveries. Wait and see how well they manage to climb this mountain of runs. So highlight of the innings, I think, more than a contribution from the bat. I think highest run getter is extra. They conceded, Siddakatte conceded 25 extras, and is definitely going to be a second highest extras conceded by the team. So at the same time, one more record in this highest total is concerned. This is going to be a second highest total score of the tournament by any team. The first team, which is Bandar 11, scored 84 runs in the stipulated 8 overs, and it's going to be a 78 is going to be a second highest team total of this tournament, and that was in the name of Jagari Warriors. Now wait and see will they manage to win the match or not. So signal came from umpire. Rakshit will going to bowl first over. Rafiq, the left-hand batsman, a very busy customer and useful limited over cricketer batsman, facing the first delivery. Misjudgment, thought that it might be the wide ball, but well within the reach of the batsman actually, and rightly so. Umpire is unmoored. So one first delivery, as Rafiq couldn't manage to judge the line of the delivery. As again bowler Rakshit bowling, right arm over the wicket. Improvising, went for the reverse paper, not quite able to beat the infield as he picked up a single. Rafiq, and score was up to 1 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. So highlight of the innings of Jagari Warriors, highest run getter is Rajesh, who scored quick fired 16 runs with help of one boundary and one massive 6, and he scored valuable 16 runs, and Yogendra scored 12 runs in 12 balls. This time full toss outside the off-stamp placement is not good indication. Couldn't manage to take the full advantage of full toss delivery, but he managed to get a couple of runs down to wideish long off. With that couple of runs, batsman Riaz is off the mark, and scope of Siddakatte, Priston Siddhak moves up to 3 on the board. Here you go, next ball. Just upside down the ground. Beautiful stroke. Down to deep long off. Straight to deep long on boundary for 4 runs. Delightful straight drive. Right over the head of the bowler. Even the deep long on and deep long off is there. They are just a spectator watching the ball going over the rope for 4 runs. That's what is a positive approach required here for the batsmen of Priston Siddhak whenever they're chasing a big total like 79 to win the match, and that will give a lot of confidence for the batsman. Beautiful shot. Exquisite timing behind the strokes as the next one. Right arm over the wicket. Try to repeat that one, but this time bowler a little bit clever piece of bowling. Changing the line here as a slight leg cutter, a little bit outside the off stump, and batsman completely beaten. Good comeback there from Rakshit. Need to be after that delivery which is finished by the batsman. Rakshit, right arm over the wicket. Bows Riaz down the leg stump. Of course, it's inside edge of the bat. We can see how you can hear the sound of the bat contact with the ball, and suddenly it's going to be a one more run for Riaz and one more for his team. So chasing 79 to win this match. They are 8 on the board. The required run at the beginning itself, it's almost 10 runs per over, but they got 8 in the first over. Wait and see how well they managed to play the second over of the power play. So time is exactly the 1 o'clock here. Very hot condition. So probably nowadays is temperatures are very high here in Mangalore. The record number of temperatures yesterday is 37.4 degrees was the highest temperature recorded yesterday. But now it's a little not that much of hot today. It's a 29 degrees Celsius. It's definitely going to be a not that much of difficult
And even there's a strong wind is there in the middle as well. So first delivery of the over number 2, then batsman nice looking drive down to wideish long off region for a single, then score moves up to 9 on the board without loss of any wicket. Rafiq and Riaz, they got a good start, a steady start. Of course, the only one boundary came from that last 7 deliveries, but still there are 5 deliveries left in their innings. 5 deliveries left in this power play over. Dixit is bowled very well. Another 70 runs required to win this match. Monumental score, but not impossible. In cricket, anything is possible. Needed some sensible batting and calculated risk has to be taken. Without taking a risk, you can't win the matches, big matches like this. Wait and see. Dixit from the far end, right arm. Down the leg stump, batsman tried to work that on the onside, but it's going a little bit away from the batsman, so that wide call by umpire. At the same time, warning number 1 has been given to bowler Dixit because he's coming right in front of umpire, and that was a protected area as well. So that bowler should be very careful not to continue that mistakes, as the score dumped into double figure 10 on the board without loss of any wicket. Dixit to Rafiq reaching for the delivery, not quite getting the timing behind the strokes, but still picked up a single. That is very important for Siddakatte, Pristan Siddakatte, to rotate the strike, not to play too many dot deliveries. They need to convert each and every one as a scoring one, because they are chasing 79 to win this match. Almost 10 runs per over is a required run rate. As Dixit again bowling, right arm over the wicket. Riaz improvising. This time not a good piece of fielding there by the fielder. Tried to stop the ball on his legs, but ball is missing his legs. But that was a good recovery there from the fielder in the short third man, quickly moving towards the direction of the ball, so that batsman completed a couple of runs. So Yogendra, the fieldsman, who tried to stop the ball from his legs, but fielder from the short third man fielded very well in the relegation. Couple of runs, score was up to 13 without loss of any wicket. Here is Dixit, right arm over the wicket. Riaz this time went for the big shot. Opportunity of run out in the non-strikers, and wide throw came from the field. Wicket keeper in the relegation, so that batsman survived from that run out. Leg boy call by umpire in the relegation. Little bit of hesitation, yes and no, because wicket keeper Jayant didn't got the ball in his hand. Ball is slipped out of his hand, so that batsman tried to get the single there. Might be a little bit of hesitation, but at last they managed to complete that single. Not a quick throw from the Jayant there. And that's why the batsman survived from that run out. Score was up to 14 on the board. Deep backward point now here for Rafiq for the reverse sweep, and one fielder is for him the deep in the deep backward square leg. This time lovely looking drive, but lack of place. Opportunity of run out in the non-strikers, and it's going to be a third umpire will going to take the decision here. Iqbal doesn't want to take any risk because he knows the technology is really advanced here. So that why not, it's going to be an opportunity for our technician and cameraman have a little bit of work here. Wait and see what could be the decision here. So coming back to the technician and cameraman's done a wonderful job of Y Sports, Mr. Yasir in his leadership. The cameraman Mehtob Bost, Ali, Shabir, and technician Sharat and Tavriz, the official scorer, done a wonderful job in this Y Sports through YouTube channel, done a wonderful job. So out is the decision here, so that Rafiq is a little bit disappointment, because he is the kind of batsman you can be the handy whenever you're chasing a total like a 79 to win the match. This man definitely going to be a big drawbacks here for Pristan Siddhak losing Rafiq in the form of run out. Excellent piece of fielding there by the short mid off. Not only fields the ball very quickly, but at the same time he returns that one very quickly just over the base, and then Rafiq finding himself short of his crease. Once again, thank you very much our technicians and cameramen. So done a wonderful job here to judge the run out here. So 14 for the loss of 1 wicket, the over number 2 in progress. Wonderful organization there from again under the leadership of Qadar Shirain in the name of Elegant Trophy 2019. Almost a successful 2 days. We are in the 3rd day, and you're watching the match number 3 of this day number 3 in the name of Elegant Trophy 2019 edition 2. Most prestigious cricket tournament played in this UCC cricket round, Kudla Premier League, and
RRPI UFC trophy, one of the most prestigious cricket tournament underarm cricket history is concerned. One must say that is a World Cup of underarm cricket, which is won by Katte friends this year, defeating Vijay Lakshmi cricketers in the final. This time, lovely shot, beautifully played, absolutely imperious extra cover drive. Nothing much worried about to run for that strokes because that ball went like a bullet. That's what required for the batsmen of Pristan Siddhak. Lovely shot. Quite deliberately played that one, lofted stroke down over the head of the deep cover region boundary for 4 runs. 18 for the loss of 1 wicket. Still, actually, the run rate is not that much of bad here. 9 runs per over. Might be the asking run just going over 10 runs per over, but can be achievable, especially in the present cricket, especially in this tournament. They are witnessing some big chasing as well. Even 70 plus runs is a chase down in this cricket ground. So probably not to lose the confident here for Pristan Siddhak. If they bat well, they can win the match. But for winning this match is concerned for Jagari Warriors. Now definitely they know that after that power play they can bowl some good overs. Wait and see the strategy from both the teams to win this match. Habib is the skipper of the side. He came into middle for Pristan Siddhak, the captain of Pristan Siddhak. Siddakatte, of course, the new team, the first time they are appearing in this UCG cricket ground. Once again, I would like to give the thanks to the organizers because there was too many new teams got a chance here to come and perform. It's always going to be a dream and prestige for any teams to come and perform in this most beautiful cricket ground, UCG. Always going to be a dream because it is the birthplace of underarm cricket. It's a Kashi of underarm cricket. This is a mecca of underarm cricket. Outside the off stump, the batsman tried to play that reverse sweep in that occasion, but because of little bit extra bounce in that occasion, batsman couldn't manage to play that one properly. Ball is missed that one completely, missed the bat completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and there's no chance of any run. 18 for the loss of 1 wicket. Habib, get ready for a little bit correction. Riaz tried to work that on the onside region. Leg by call by umpire. One more addition to total score now moves up to 19 on the board. Rakshit, his first over is conceded 8 runs. That was in the power play, but it's no problem whatsoever. He can keep the fielders in the 5 in the deep, and he's probably kept that 5 fielders in the deep as a Rakshit. The ball's down the leg stump, going further away, going to be a 1 more wide here. And each and every run definitely going to be a Triscon Siddhak will going to enjoy. The extra that they wanted to enjoy because they already considered 25 extras for their opposition. So they wanted that kind of extras if they wanted to win the match from their opposition as well. 20 on the board. 59 more runs required in this match. Again, batsman almost dragging that one from outside the off stump to get the single down to deep long on. So with that single score now moves up to 21 on the board. Over number 3 in progress. That brings Habib into strike now. Down the leg stump, around the legs, that ball passes. Between the legs actually. That ball passes and wicketkeeper behind the stump collects the ball. Rakshit sometimes balls a very quicker delivery, so that batsman really surprised with that quicker delivery from Rakshit there. So really enjoying the condition of this pitch. Rakshit. Balls again. Lovely shot. No need to run for that. That ball traveling towards a defined leg boundary for 4 runs. Just like it race a bullet. Again, skipper Habib seeing the opportunity. That a poor line ball there by Rakshit. No adequate field for that. Bad line and good treatment. Score jumped into 25. It's a very good reply there from Priston Siddhak. They are really not given up this match, and captain himself sending a strong message to opposition. He is not yet given up. Again, not a good thinking there from the batsman Habib. There's wanted to play the free meditative switch it, and this time Rakshit is very clever to ball down the leg stump. Dot delivery to end over number 3, then chasing 79 to win this match. And Priston Siddhak, they are 25 on the board. Now just going over 8 runs per over. But certainly the asking run is climbing up. But just coming to that
run required and deliveries remaining. 5 overs remaining. That means 30 possible deliveries remaining, excluding wides and no balls. Out of that, they need to get another 54 runs to win this match. The difference between run and ball exactly that 24. That was a really big headache here for the batsman. That was a difference. That was a 24 between run and ball, and they need to bring down that difference in each and every over. So that each and every over they required at least more than 10 runs per over, at least 12 to 13 runs per over. Then only they can win this match. So not impossible, even though it's a difficult one, but it's definitely going to be achievable. And Anantesh, one more experienced bowler for the side. After a long time watching Anantesh in this UCG cricket ground, one of the most fastest bowler with the shortest length, shortest run-up, one must say. As a first delivery, batsman missed it complete. Wicketkeeper behind the stump also missed it, and batsman completed the single. Might be the opportunity of caught behind, looks like that. And 26 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. Anantesh, right arm over the wicket. Balls bowled him, cleared him up. He's the master of bowling a leg cutter. Not just like everyone bowls a leg cutter, slow leg cutter, but he's bowling a quicker leg cutter in the negation. So batsman really misjudging the turn of the delivery, nowhere near the pitch of the delivery. Across the line he wanted to play that one without moving the feet into the line. And then he faced the penalty for that. 26 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. So new batsman walking towards the middle is a very experienced campaigner for the side of Pristan Siddhak. Anif came into middle here. A lot of responsibility in his shoulder. Being the experienced campaigner, you know exactly the situation very well. They need to handle the two things here, the batsmen of Pristan Siddhak, that not only they need to keep their wickets in hand, at the same time they need to accelerate the run rate as well. 26 for the loss of 2 wickets. Anantesh picked up a wicket in his first over. Deep long on, deep long off, deep cover, and one at deep mid wicket and one at deep backward square, like all the fielders in the deep as Anantesh from the far end. Bounce outside edge of the bat, but out of the reach of wicketkeeper. That's ball fallen between that short third man and wicketkeeper, so batsman completed a single. Outside edge of the bat, and if he's off the mark with a single, then score moves up to 27 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Anantesh. This time going for the big shot, and it's going to clear the fence. It's going to be a maximum. The much required elegant 6 came from the bat of Riaz. He is the man who can take his team into the victory. Way he batted came as opener for the side, and he really handled the pressure very well. 33 for the loss of 2 wicket. He is batting on 22 runs out of 11 deliveries with a strike rate of exactly 200. Oh my goodness, this is a beauty. Absolutely perfect delivery for any batsman, right-hander batsman. Pitching on the middle stump, slight leg cutter. Batsman has got a two-minded, go for the front foot or back foot, and then ball is just passing outside edge. One more good delivery there from Anantesh. Sensible batting, I will tell you. The batsman quickly realizing that the bowler bowling a good line. Sometimes he need to give the respect for the deliveries like that. But chasing 79 to in this match, searching for the right track. Priston Siddhak, not probably they are 100% in this game, but maybe they are almost a 40% in this game. But they need to convert that 40 into 100%. They need to bat very well in the remaining 4 hours. Wait and see the strategy of these two batsmen to win this match. Before I hand over the microphone to Gopi, I will tell you 24 deliveries remaining. Out of that, they need to get another 46 runs to win this match, and wait and see what will going to happen in the remaining 4 hours. It's time to ask Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो एक कठिन सा लक्ष्य इस वक्त प्रिस्टन सिद्धकट्टे के सामने, लेकिन नामुमकिन नहीं, और एक दिलेर भरी बल्लेबाजी उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। देखते हैं उनके बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। दीक्षित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा, और वाइड के साथ शुरुआत इस वक्त कर चुके हैं दीक्षित। 34 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, 2 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 45 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries। और दीक्षित रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि शॉट फाइन लेग पर और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। अगर सीधे बल्ले के साथ खेलते तो ये निश्चित रूप से वाइड हो सकता था, लेकिन रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया और आखिरकार सही गेंद घोषित, अंपायर द्वारा सही निर्णय। और दीक्षित एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा, और इससे पहले कि थ्रो पहुंचे नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ द बैक फुट गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त खेला था खूबसूरती के साथ डीप कवर पॉइंट पर, और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 36-36 दीक्षित, ये गेंद एक बार फिर से, इस बार थोड़ा सा सीधा वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। गेंद को सीमा रेखा के अंदर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर द्वारा रोका गया एक बेहतर तरीके से, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये दोनों बल्लेबाज जीतोड़ कोशिश करते हुए इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के लिए। ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, इस वक्त एक बार फिर से 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। चतुर क्रिकेट, खाली क्षेत्र को पहले ही भाप लिया था इस वक्त डीप बैकवर्ड पॉइंट और डीप कवर पॉइंट के बीच, और आखिरकार गेंद को उस क्षेत्र में रिवर्स शॉट के जरिए ढकेल कर 2 रन बल्लेबाज ने अर्जित कर लिए। 40 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 40 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दीक्षित हनीफ के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, आओ इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड शॉट फाइन लेग फील्डर द्वारा, और इस बीच बाई के रूप में यह रन जुड़ चुका है। गेंद को आखिरी मौके पर देखा कि लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है, अपने रिवर्स शॉट को रोक लिया, गेंद को जाने दिया सिर्फ विकेटों के पीछे, और 1 रन इस बीच बाई के रूप में बल्लेबाज प्राप्त करते हुए। 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दीक्षित एक बार फिर से तैयार, रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा जवान 4 रनों के लिए। रन इस वक्त चाहिए प्रिस्टन सिद्धाकट्टे को, वो किस शैली से बनते हैं ये उन्हें जरूरी नहीं है, और यहां पर ट्विस्टेड बैट के जरिए एक बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त खेला, तिरछे पल्ले के सहारे रिवर्स शॉट के जरिए, स्विच हिट के जरिए, और चौका इस वक्त अर्जित करते हुए गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त रियाज के बल्ले से, और जहां तक रियाज का सवाल है, शीट एंकर्स रोल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्य सूत्रधार की भूमिका वो इस वक्त अदा करते हुए आरंभकार की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, अभी तक क्रीज पर डटे हुए और उनका अच्छा साथ इस वक्त निभाते हुए हनीफ। और कुल मिलाकर साझेदारी के बारे में अगर कहा जाए तो दूसरा विकेट गिरा था 26 रनों पर, और उसके बाद 45 रन बन चुके हैं, यानी 19 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए अब तक ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में बन चुकी है। और प्रिस्टन सिद्धकट्टे का जहां तक का विजय का सवाल है, ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त प्रिस्टन सिद्धकट्टे के लिए निश्चित रूप से आशा किरण बनते हुए। और 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इक्वेशन पर अगर नजर डाला जाए तो 79 रनों से 45 घटा दिया जाए तो रन चाहिए 34, जबकि गेंदे बाकी है 18, यानी 3 ओवर। लेट सुरेश बी एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए आक्रामक ये गेंद बल्लेबाज ने सोचा कि गेंद विकेट कीपर के हाथों से छूट चुकी है, पीछे की ओर निकल चुकी है, रन लेने की हड़बड़ाहट उन्होंने हड़बड़ाहट दिखाई, लेकिन आखिरकार
तो बल्लेबाज को गुमराह करने का प्रयास किया था इस वक्त। गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची थी और गेंद को उनके हाथों में लेते ही विकेट कीपर पीछे की ओर मुड़ गए और इसकी वजह से बल्लेबाज ने सोचा कि गेंद पीछे जा चुकी है, रन के लिए वो कदम बढ़ाए और आखिरकार जैसे ही वो क्रीज से बाहर निकले विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिया। लेकिन अंपायर ने कहा क्रिकेट जेंटलमैन का खेल है और आपको सीधा क्रिकेट, सीधी तरीके से क्रिकेट इस वक्त खेलनी चाहिए। बल्लेबाज को गुमराह करके आप कुछ साबित नहीं कर सकते और सही निर्णय अंपायर का यहां पर रहा। ये गेंद आक्रामक स्ट्रोक, इस बार गेंद को सीधी तरह कलेक्ट कर लिया विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे। इस बार भी उसी दौर से कुछ हद तक मुड़े जरूर, लेकिन पिछले गेंद पर की हुई गलती का उन्हें एहसास हुआ तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को रोक लिया। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त पॉइंट की दिशा में, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे। आखिरी मौके पर डीप बैकवर्ड पॉइंट और डीप कवर पॉइंट के दरमियान जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो 2 रनों के साथ 47 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त पहुंच चुका है। यह गेंद आक्रामक स्ट्रोक लगाने का प्रयास, बेहतरीन गेंदबाजी अनंतेश द्वारा, बिल्कुल कसे हुए गेंदबाजी इस वक्त वो करते हुए इस ओवर में और तैयार। फुल टॉस, इस बार गेंद को खेला लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को गेंद टकराने के बाद अपने रफ्तार को जब तक खोए बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का जब तक गेंद को सिली मिड ऑन पर फील्ड कर लिया जाता। 48 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अनंतेश केवल 3 मात्र रन इस ओवर में अब तक वो प्रदान न कर चुके हैं। ये गेंद को खेला खूबसूरती के साथ वाइड स्लॉग पर और गेंद को बेहतरीन फील्डिंग वहां पर करते हुए फील्डर लगभग गोली की रफ्तार में गेंद उनकी दाईं ओर आई और दौड़ते हुए आखिरी मौके पर गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में सफल और आखिरकार अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को उन्होंने फील्ड करने के बाद थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर पर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 2 रन प्राप्त करने का। द 50 इज अप फॉर Pristan Siddhak, 50 रन पूर्ण हो चुके हैं। 50 for the loss of 2 wickets after the completion of exactly 6 overs. 29 runs. Still they have to score for victory. 29 more runs. In fact, they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in 12 deliveries with the help of exactly 14.5 runs per over. Still they got 8 wickets kept intact. 8 wickets they got in their hand. And let's see what the batsmen of Pristan Siddhak are doing in this remaining last 2 overs in their innings. दीक्षित गेंदबाजी संभालते हुए चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त प्रिस्टन सिद्धक के बल्लेबाजों को समीकरण इक्वेशन आसान न करने के लिए। ठीक 14.5 रन प्रति ओवर के औसत से रन इस वक्त बनाने हैं 29 बचे हुए 2 ओवर में और ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही अब प्रिस्टन सिद्धक का भविष्य यहां पर बदल सकते हैं। दीक्षित नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हनीफ इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए ये गेंद इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में और इस बीच जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर। स्क्वायर लेग अंपायर इकबाल ने इशारा किया पेविलियन की ओर, कमेंटेटर बॉक्स की ओर और अब देखना यह है कि थर्ड अंपायर डिसीजन को परामर्श करने के बाद क्या निर्धार लेते हैं। And the decision came
नेगेटिव, दैट मींस नॉट आउट, और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बच चुके हैं। तो स्कोर बोर्ड रुक चुका है, बढ़ चुका है कहना पड़ेगा, 1 रन के साथ 51 रनों पर। 51 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 28 रन टू स्कोर इन रिमाइनिंग 11 डिलीवरीज। स्टिल द बैटल इज ऑन। तो संघर्ष अभी भी जारी है और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दीक्षित फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर डीप बैकवर्ड को लेग फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। रियाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार इस वक्त। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दीक्षित की गेंद, ड्राइव किया, गेंद को लॉन्ग ऑन पर उछाल कर, लेकिन एकमात्र रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पर थ्रो पर तो नजदीकी मामला और इस बीच यह विकेट गिर चुका है। सही निर्णय अंपायर सीरज का। जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज का बल्ला हवा में था और एक बेहतर निर्धार इस गेंद पर अंपायर सीरज ने दिया बिना थर्ड अंपायर को बुलावा देते हुए, और इसी के साथ यह विकेट नंबर 3 गिर चुका है। तो बीस रनों की साझेदारी टूट चुकी है। 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो 26 रनों की साझेदारी का अंत इस वक्त हो चुका है। बल्लेबाज आउट होने वाले बल्लेबाज हनीफ और उनका स्थान ग्रहण करते हुए नंबर 5 बल्लेबाज की हैसियत से सिद्दीक इस वक्त क्रीज पर मौजूद। 10 गेंदों में चाहिए 27 रन। ये गेंद caught behind, yes it does, it's got a deflection, it's got a nick on that and behind the stumps wicket keeper made no mistake। तो एक और विकेट गिर चुका है। रियाज की मैराथन पारी पर इस वक्त पर्दा गिर चुका है। विकेट कीपर द्वारा लपक लिए गए, गेंद को उछालना चाहा था, गेंद कुछ हद तक घुमाव लेती हुई, टर्न लेती हुई आखिरी मौके पर बल्ले का बाहरी सिरा लगा, टकराया और सीधे गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और इसके साथ ये विकेट नंबर 4 गिर चुका है। दोनों सेट बैट्समैन पेविलियन वापस लौट चुके हैं लगातार 2 गेंदों पर, और इन 2 विकेटों के पतनों लगातार 2 विकेटों के पतन के बाद इस वक्त मंजिल काफी दूर नजर आती हुई, लक्ष्य और कठिन नजर आता हुआ इस वक्त प्रिस्टन सिद्धकट्टे के लिए। 9 गेंदें बाकी, 27 रन चाहिए, 3 रन प्रति गेंद की औसत से रन बनाने। 27 टू गेट फ्रॉम 9 बॉल्स। बिग स्ट्रोक्स बैडली रिक्वायर्ड फॉर प्रिस्टन सिद्धकट्टे टू गेट बैक इनटू दिस मैच। दीक्षित एक बेहतर लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। फयाज स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, गेंद को ड्राइव किया इस वक्त, फील्डर वहां पर मौजूद और गेंद को मैं समझता हूं रोका गया, वहां पर थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त। बेहतर फील्डिंग, फील्डर द्वारा सीमा रेखा के अंदर लॉन्ग ऑन पर गेंद को रोका उन्होंने, और स्ट्रेट हिट एरिया पर कहना पड़ेगा, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान स्ट्रेट हिट एरिया पर, और एकमात्र रन बल्लेबाज को इस गेंद पर मिला। 26 रन चाहिए 8 गेंदों पर। 26 टू गेट फ्रॉम 8 बॉल्स। बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली बेहतर, फ्लाइटेड वन, और बल्लेबाज स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके और गेंद पैरों पर टकराने के बाद सीली पॉइंट पर विकेट कीपर ने अपने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया, रन सब बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंदबाजी। दीक्षित इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप पर, बेहतर गेंदबाजी, एब्सोल्युटली गुड पीस ऑफ बॉलिंग, कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स टू एंड द ओवर, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 53 for 4 after the completion of 7 overs, 79 the target, that means 26 they have to score in last over, और 26 रन चाहिए अंतिम ओवर में। अब ऐसा कहना पड़ेगा चौके या छक्के ही मैच का नक्शा इस वक्त बदल सकते हैं प्रिस्टन सिद्धकट्टे के लिए। एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 2 2019 इस मेगा श्रृंखला का तीसरे दिन का तीसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ, और इस वक्त जुगारी वॉरियर्स का पलड़ा तख्ता भारी लगता हुआ।
लेट सुरेश बीएन एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए राजेश। (26 to get from last over. Still some fielding adjustments is going on there. तो इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा और पैरों पर गेंद टकराई और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। सिद्दीक की पारी समाप्त और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा समस्याएं और बढ़ चुकी है। प्रेस्टन सिद्धकट्टे की पारी की नैया इस वक्त बीच मझधार में जूझती नजर आती हुई और किनारा तट जो कि काफी दूर इस वक्त दिखाई देता। वाह, सिर्फ छक्के और छक्के ही इस वक्त उन्हें सही किनारे तक पहुंचा सकते हैं। 26 रन चाहिए 5 गेंदों पर। 26 to get from 5 balls. गेंदबाज तैयार। 26 to get from 5 balls. Here we go. बेहतर गेंद, फुल टॉस, गेंद को जाने दिया। यह अंदाजा लगाते हुए कि वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और इसी के साथ जुगारी वॉरियर्स की विजय निश्चित है अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो। बचे हुए 4 गेंदों में यह गेंद को खेला इस वक्त डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए। 54 नाउ एंड नाउ 25 to get in remaining 3 deliveries. Inside edge onto the stumps, one more wicket fallen, wicket number 6. It's 54 for 6 and it looks like almost all over now for Pristan Siddhak. 25 to get in remaining 2 deliveries, and that is an absolutely impossible task if the bowler cannot bowl no ball or wides at this situation. So number 8 batsman is now coming out to the middle wearing number 88 jersey. Afreen, 25 to get from 2 deliveries. Bowled out, one more wicket fallen. First ball dismissal, golden duck for Afreen and a 7th wicket gone for Priston Siddhak. 54 for 7 and now last delivery remaining. And 25 runs they have to score in last ball. और अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें अंतिम गेंद पर 25 रन बने हो। तो निश्चित रूप से असंभव सा लक्ष्य। और जहां तक सवाल है, so the last ball of the match is now coming up. Off stump se bahar and wide. 55 for 7. Still last ball remaining. 24 to get. Misses. That's it. Comprehensive victory by 23 runs for Jagari Warriors, defeating Priston Siddhak, and with that comprehensive victory they are qualified for the next round of this competition. तो अगला मैच, the next match will start exactly at 2:15 at afternoon. Right after 40 minutes break, and between Jugari Warriors and Bandar 11. Jagari Warriors, the winners of this match, will meet Bandar 11 in the next match, and that match will commence at exactly 2:15 right after 40 minutes break. Till then we are saying a goodbye right from our commentator box. So 2:15, 15 past 2.
the next match will commence. Till then we are taking a short break and we'll be back right after 40 minutes break with my friend Satish in English when the next match will commence at exactly 2:15. Thank you. Dhanyavad.